This episode of The HJ Show is powered by Tessie Labs. महंगाई बढ़ रही है and two people should run the house together. So that's where this independence came into picture. So this Lakshmi used to hit a lot, in terms of every woman or everybody, even a man used to sit for the session and think कि हाँ यार, she is the घर की Lakshmi, my spouse, my sister, mother. अच्छा, what do you do was the first question because that name never depicted what was happening here. But सबके अपने अपने financial arrangements हो गए हैं. तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो मिसिंग है कि घर में किसी को पता नहीं है एक दूसरे के फाइनेंसेस के बारे में. So welcome to another episode of the Edge Show. In this super special episode, in this episode we have a financial educator, author, a podcaster. Further to add on, a TEDx speaker, also recognized among India's top women in finance in the year 2023. And last but not the least, the founder of education venture LaxmiGyaan. So, to my viewers, to my subscribers, to my listeners, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have the one and only Priyanka Acharya on the Edge Show. So, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस podcast में, and thank you so much for being a part of it. Thank you, Harsh, for all the effort that you've taken to make this happen. Okay. Well, it's a great thing to have you on this podcast. So, first of all, before talking about your journey, about a lot of interesting topics like financial education, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा about your background, about your prior background, and how you got into this financial education and became an educator. So, आप थोड़ा उसके बारे में brief कर सकते हैं. Sure. So मैंने अपने चाइल्डहुड में एक एस्पिरेशन रखी थी कि आई वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट. So there was no finance, no numbers in my childhood. It was all purely human behavior, psychology, and I used to love reading books and understand how humans react to certain things. But उस जमाने में ऐसे था कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप आर्ट्स को एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं करते. सो you are born an artist but still it's an unpopular option. Yes. So I was also persuaded by my parents to pick up science or commerce, and that's how I started my journey with commerce. Meanwhile, across all the years that I did my post graduation and everything went in finance. मैंने अपना M.Com, MBA सब कुछ खत्म किया. 5 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद I got a chance to work with Bombay Stock Exchange. That too as a faculty and a content manager. And when I started aggregating content on financial education, talking to different kinds of people who used to come to the BSc, that's when I realized that finance में एक psychology का भी perspective है जिसको शायद हमने देखा नहीं है या बहुत ज्यादा हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है. सो वी आर ऑलवेज इनटू दैट क्विक फिक्स थिंग. तो इस पे कुछ ध्यान देते हैं. एंड दैट्स हाउ ओवर द इयर्स आई कुड बिल्ड अप अ ब्रांड कॉल्ड एज LaxmiGyaan. LaxmiGyaan is basically on a mission to redefine financial education across the globe. So that's how we have this psychology blend into finance. And now I very proudly say I thank my parents for making me convinced about this profession. And now I always say that I have I'm married to finance, but I have an extramarital affair with psychology, and both my spouses are very happy about it. Okay. So, see, if I speak as a layman, जैसे of course financial education की importance है, जैसे आप उसको अगर अपनी भाषा में, एक सरल भाषा में, एक लेमैन के लिए अगर आप समझा सकते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन योर लाइफ, अगर आप थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में. अगर हम हिस्टोरिकली सोचे तो 40-50 साल पहले देयर यूज्ड टू बी वन पर्सन इन द हाउस हु वाज द ब्रेड विनर एंड बाकी के सारे उनके डिपेंडेंट्स होते थे. So there was only one person who was supposed to earn money and make sure that at any point of time money is there in the house. तब ऐसे था कि one person could take all the decisions because he or she was the only person to take charge of the finances. Then if you see 20 years back, there came an era of financial independence where women started getting a lot of education, and then it was like महंगाई बढ़ रही है and two people should run the house together.
सो दैट्स वेयर दिस इंडिपेंडेंस केम इनटू पिक्चर. तो जो डिपेंडेंस का फेज था वहां से हम इंडिपेंडेंस में तो पहुंच गए. Yes. But today we are in a phase where probably every person in the house is earning or doing something or the other to gain money. But सबके अपने अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हो गए हैं. तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो मिसिंग है कि घर में किसी को पता नहीं है एक दूसरे के फाइनेंसेस के बारे में. दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ इनग्रेन्ड impacts, and that's where financial education is so required in today's times. Yeah, truly, because even in generic terms की planning जरूरी है. जैसे this is some other example. जैसे लोग not just in this digital age, उससे पहले भी जैसे लोग काफी बार ऐसा होता है कि एकदम बहुत बल्क में पैसा आ जाता है. अचानक कोई है ना, जैसे लॉटरी लग गई या कुछ हो गया, कोई रियलिटी शो में चले गए. बट ऐसी खबरें भी आई है, इन सम इयर्स दे गो बैंकरप्ट. Totally. ऐसे सुने हैं. तो ये इसी का एक रीजन है कि जरूरी है किस तरह से स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना. And beyond buying instruments as well, there is so much to do. ऐसा नहीं है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, एक इंश्योरेंस ले लिया, अब बस गंगा नहा लिया, मेरा तो काम हो गया. That doesn't work today. So I have to upgrade because मेरा लाइफस्टाइल हर रोज अपग्रेड हो रहा है. सो हर 3 महीने में मुझे एक नया फोन का मॉडल दिख रहा है. हर 3 महीने में मुझे कुछ ऐसे मेरे लाइफस्टाइल टेम्पटेशंस बढ़ रहे हैं. वो लोकेशंस जो हमने कभी सुने नहीं है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन रहे हैं. Yes. So there are so many places where we want to spend money. Our bucket list is increasing. Impact of Instagram. Impact of lot of things. Lot of things. Obviously, I can't just think that earning money, saving money is enough. I have to understand that बहुत सारे छोटे छोटे nuances हैं जिनको सीख के समझ के as a family I have to become a team and manage. True. बिल्कुल सही कहा. इसके अलावा आई वॉज कमिंग टू दिस पॉइंट कि जैसे आपने ना, जैसे मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अपने नाम के आगे भी एक जैसे मिशन टाइप जोड़ा हुआ है. जैसे इफ आई यूज द राइट वर्ड, आपने अपने नाम का संधि विच्छेद किया हुआ है, लाइक प्रिय एंड दैट. सो आप उसको थोड़ा बता सकते हैं? मैं थोड़ा आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट. Sure. So when I was when I was in this mainstream thing where I decided कि अब मुझे अपने आप से कुछ करना है एंड मैं इस फाइनेंशियल एजुकेशन के मिशन पे निकल पड़ी थी. आई वांटेड टू नेम द कंपनी. एंड इनिशियल डेज में आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो. यू वांट टू टेस्ट द वाटर्स. सो आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन. और मुझे उसको प्रियंका नाम नहीं देना था. मतलब इट्स अ वेरी क्लीशे, मतलब वेरी कॉमन नेम. प्रियंका name. तो बहुत नाम होते हैं. सो आई वाज जस्ट वांटिंग टू मेक इट समथिंग मीनिंगफुल. एंड दैट्स हाउ मैंने उस प्रियंका को तोड़ के सोचा कि प्रिय का मतलब होता है फेवरेट. फेवरेट. अंक का मतलब होता है इन थिएटर, या अंक यानी एक एपिसोड होता है. तो दैट्स हाउ दैट मिशन गॉट डिजाइन्ड, वेयर आई सेड दैट Priyanka is your favorite episode in your financial story. ओके. सो या ऑफ कोर्स, जैसे मतलब आपने बहुत ही होता ना, जैसे अपने नाम से एक अच्छा वो एक मीनिंग भी वो डिनोट किया. राइट. अच्छा, ये जो है योर पर्टिकुलर वेंचर लक्ष्मी ज्ञान, एंड इट एक्चुअली सिग्निफाइज द नेम लक्ष्मी ज्ञान. बिल्कुल सही तरीके से, मतलब एक इस हिसाब से एक देसी नाम भी है. देसी मतलब यूज द राइट वर्ड, जिस तरह यूज करते हैं, देसी भी है, प्लस उसका नाम भी इस तरह से होता है. सो हाउ दिस व्हेन यू डिड स्टार्ट, लाइक आपने कब शुरू किया ये, और ये आपको इस तरह का आइडिया कैसे आया यार इस तरह का नाम रखना चाहिए हमें? So as I said, when I started, it was Priyanka. So it was a plain name called Priyanka Consulting Company. But eventually, I got into the confidence mode that, मुझे ये करना है. And with so many damaged families and individuals coming at times, saying that I'm undergoing a separation and there is a financial implication over it because finance के बहुत झगड़े होते हैं divorces में. या फिर people came and said that my spouse is no more and now I have no idea what to do. तो आप मुझे help करेंगे क्या? डिजीज आया है तो इमरजेंसी आ गया, हमारा सारा सेविंग्स धुल गया, आप मुझे हेल्प करेंगे क्या? सो ऑल दिस वाज वेरी कॉमनली कमिंग इन, एंड दैट्स वेयर आई फेल्ट दैट वी वांट टू मेक दिस एन एंटरप्राइज, and it has to change the kind of financial education that we usually take.
तो फिर हमने एक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड यानी 1 person कंपनी विद अ सिंगल डायरेक्टर. सो आई इनकॉर्पोरेटेड अ प्रॉपर कंपनी विच वाज कॉल्ड एज लर्निंग लाइफलाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि Okay. वो केबीसी के लाइंस पे था कि हमारे पास 4 वर्टिकल्स थे. सो इट Mhm. वाज 4 लाइफलाइंस एंड यू कैन नॉट अर्न विदाउट लर्निंग. सो अर्निंग और लर्निंग को जोड़ के हमने उसको लर्निंग लाइफलाइन बनाया था. But whenever I was giving my visiting card at any event or session, Acha, what do you do was the first question, because that name never depicted what was happening here. Eventually, I did a 7 days trip to Ahmedabad where I was doing only sessions for all 7 days. और हर सेशन में फर्स्ट डे से मैंने शुरू किया था बोलना कि मेरा सेशन शुरू होता था ये बोल के कि इंट्रोडक्शन तो मेरा दिया है वो तो ठीक है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन मैं बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ उस इंट्रोडक्शन के लिए कि मैं 2 परिवारों की लक्ष्मी हूँ. So this Lakshmi used to hit a lot, in terms of every woman or everybody, even a man used to sit for the session and think ki, हाँ यार, she is the घर की Lakshmi, my spouse, my sister, mother. So that way, a lot of change happened, lot of impact happened, और वो session recall होने लगा. So that's where this thought came to my mind that actually लक्ष्मी को लक्ष्मी का ज्ञान नहीं होगा, तो what is the benefit of having that identity, and that's how I renamed it to LaxmiGyaan. Okay, LaxmiGyaan. And उसके मैंने देखा है, I've seen that कि you have some defined courses. उसको आपने MBA एक short form में अलग तरीके से, अलग लिहाज से दिया है. उसका थोड़ा आप कुछ बता सकते हैं? Sure. So LaxmiGyaan works on 2 different verticals. एक है कि हम families में financial conversation लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के काफी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट्स करते हैं. दूसरा एक वर्टिकल ये है कि while I was thinking about all these instruments in the market, I saw that आजकल बहुत ट्रेनिंग्स होती है टू द इंटरमीडियरीज ऑल्सो. तो जो एजेंट्स Yes. एडवाइजर्स होते हैं उनको बहुत कुछ ट्रेन किया जाता है. बट हेल्थ इंश्योरेंस विच वी कॉल एज मेडिक्लेम्स पॉपुलरली had very restricted line of education. I mean, there are a lot of things happening now and with the IRDA thinking a lot. बहुत कुछ हो रहा है, but वो एक restricted product technicalities वाला education था. एंड बिकॉज ऑफ कंपटीशन उस प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें बढ़ रही है. प्लस एक व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज्ड है, अब उसके रिलेटिव्स अगर तब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पॉलिसी पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारे शॉकिंग चीजें पता चलती है. तब पता लगता है. Yes. Yeah, which they never knew, they never asked, and they never bothered कि ठीक है प्रीमियम जा रहा है बस हो गया. So now that coverage is not specific कि मैं ये नहीं कह सकती कि 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, because it is very feature based. So we started an initiative to educate the health insurance advisors कि Okay. आप लोगों को क्या बता सकते हैं और लोगों को क्या बताना जरूरी है. इट वॉज अ वेरी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स बनाया गया था ये कि एक एजेंट और प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोर्सेज बहुत बनते हैं, बट दिस इज व्हाट अ कस्टमर शुड नो अबाउट यू एंड व्हाट क्वेश्चंस यू आस्क, व्हाट इंटरेक्शन यू डू, आप कैसे प्रोफेशनल बन सकते हैं. सो वी लॉन्च्ड इट अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ MBA. MBA stands for Mediclaim Business Administration. Yes, Mediclaim Business Yeah. Administration. Okay, and further about like if someone wants to learn about stocks or mutual funds वगैरह, of course ये एक उसका ही part है. So is it also covered in separate programs in LaxmiGyaan? जी. सो हम कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डिजाइन करते हैं. वी डोंट वांट टू जस्ट कम टू अ क्लासरूम एंड ट्रेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर थोड़ा सा कभी रिकॉल चला जाता है, कभी इम्प्लीमेंटेशन में उनको दिक्कत आती है. वी वॉन्ट टू मेक फाइनेंस अ वे ऑफ लाइफ कि वो घर में जो भी चीजें देखे उसको उसमें फाइनेंस दिखना चाहिए. सो दैट्स हाउ इट शुड बी, और वहीं से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है. So with that thought in mind, what we do is we design concepts. जैसे कि हमने एक LaxmiGyaan Housie create की है. So that Housie has all of these concepts. जो भी आप investing, insuring products करते हो, उसमें we have separate bifurcations. We have a Housie only for investing, only for insuring. वैसे भी हमने बनाया, and there is a common Housie. Then we have a Kundli which has जैसे horoscope matching होता है. तो 36 concepts of finance are put up in a Kundli. एंड कभी कभी हमको क्या होता है ना, आजकल इतना कंटेंट है हमारे आसपास, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड True. में जी रहे हैं. सो कभी कभी हमको समथिंग अबाउट एवरीथिंग पता होता है.
but हाँ. there is something incomplete which creates a real, mess in our financial lives. So that's why these 36 are focused concepts. एंड उससे हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि पैसों के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी कितनी है. देन वी हैव रेसिपीज, मेडिटेशन एंड all sorts of things which we do in daily life, and we bring all analogies into our programs. So in terms of like कि some nuances inside the house, उसको आपने एक चैनलाइज करके एक टर्मिनोलॉजी जैसे एक एमबीए रेसिपीज एंड ऑल उस तरह से आपने उसमें बताया हुआ है. राइट राइट राइट. नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो है, क्योंकि आज के समय में अगर आप कुछ भी गूगल करते हो, यूट्यूब, गूगल पूरा भरा हुआ है, और एआई भी आ गया है. आप तो पूछोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये हमारा सब सॉल्व कर देगा, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. इफ एआई इज टेलिंग यू कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो तो ठीक है, इट माइट वर्क, बट इट्स नॉट ट्रू कि पूरी तरह से वो चीज लाजिम होगी उस पर. राइट राइट राइट. सो एनीवेज, इन टर्म्स ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, यू आर ऑल्सो एन ऑथर एंड यू आर ऑल्सो पॉडकास्टर. ये आप थोड़ा इसके बारे में अगर ब्रीफ कर सकते हैं, किस नाम से है वो और कहाँ कहाँ पे लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन. सो काफी साल ये सब करने के बाद रिसर्च, लॉट ऑफ ट्रायल्स आई टुक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लोगों को क्या इम्पोर्टेंट है जानना, एंड हाउ डू थिंग्स गो इन देयर फाइनेंशियल लाइव्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस. I saw that majorly there was one small gap where women generally themselves या तो prefer to leave financial conversations or they are not included. So ये कल्चरल माइंडसेट है जो सालों से, जैसे मैंने आपको कहा 40-50 साल पहले जैसे चल रहा था, वो वैसे ही कंफर्ट जोन में आज भी बहुत जगह पे चलता है. I am not looking at making women financially independent, क्योंकि वो तो उनको एजुकेशन दे देंगे तो अपने आप से हो जाएंगी. बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग लक्ष्मी ज्ञान टू विमेन, नहीं, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग लक्ष्मी ज्ञान थ्रू विमेन. सो अ वुमन्स पार्टिसिपेशन इन एनीथिंग, आप एक बैचलर का घर देख लीजिए और एक मैरिड इंसान का घर देख लीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द डिफरेंस. Can figure out the difference. Yeah, there are 1 or 2% bachelors who are very neat and clean. कुछ मैं अभी सीरीज में एक बार देख रही थी, बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज कि चलता है यार, इतना एफर्ट कौन ले. सो व्हेन अ वुमन कम्स इनटू पिक्चर, वो अपने एग्जाम पेपर में मार्जिन्स भी एकदम क्लियरली डिफाइन करके ड्रॉ करती है. So I just took all these elements and wrote my first book. This book is called LaxmiGyaan से लक्ष्मी मान. It's a Hindi book, जिसमें यही कहा गया है कि सबसे पहले a woman will have to accept her identity of being the Lakshmi and understand कि यार इसको procrastinate नहीं कर सकते. So I can't say that अरे मेरे बच्चों में टाइम चला जाता है, मुझे तो वक्त नहीं मिलता, कितना कुछ है, I'm working, I'm this, I'm that. Let's understand that if you are the Lakshmi, you need to have Lakshmi ka Gyan. And for the men to understand that if you want to really respect a woman, then it is best that you give her the Lakshmi ka Gyan. क्योंकि उससे लक्ष्मी का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, because she understands money, she can conquer the world. So that's how that book was wrote. In fact, I'm very, very grateful. That book was, first copy of that book was gifted to Mr. Amitabh Bachchan. We received blessings on the book, and it's a very big delight for us. It has amazing 9 stories. हाँ, तो उसमें 9 कहानियां हैं, और 9 कहानियों में हर एक कहानी में उनका ही एक गाना हमने वीव किया है स्टोरी में. So that's how that book is dedicated partially to him also, because he is the one who actually exhibits a different level of respect with women. Now the second element of podcast then came, where writing was already going on, and then I got a chance to attend a podcasting workshop once. So I was trying to understand कि होता कैसे है, and how it is different from a typical conversation that people keep on having. So then I learned it. It was a 1.5 year journey. But finally, from a professor to a podcaster, it was a massive learning journey. And the first podcast I launched was India's first show, which released in 8 languages together. Yes, I was coming on that. Yes. So it's called Ek Chuski Finance, which is a sip of finance. So it is bite-sized podcast with small little episodes on little nuances of finance.
And then eventually I launched a simple podcast which is on Spotify, YouTube, everywhere currently. And it's called LaxmiGyaan Library. It is even Okay. more shorter क्योंकि attention span हम सबका गिरते ही जा रहा है. So it's a 90 seconds only podcast where one topic is dealt with stories, analogies, but only within 90 seconds. It's there on your YouTube channel. Yeah, it's there. Yes. वो किसके लक्ष्मी ज्ञान के नाम से है YouTube जी, चैनल? LaxmiGyaan के नाम से YouTube channel. राइट. तो उसमें कमिंग ऑन लाइक आपने जैसे पहले बताया कि 8 लैंग्वेजेस में आपने वो रिलीज किया था, तो वो तो मतलब ऑडियो फॉर्मेट में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, राइट? तो आपने कुछ खुद रिकॉर्ड करते हो, ऑफ कोर्स फॉर अदर लैंग्वेजेस यू हैव टू हायर समवन फॉर दैट, उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? So H2K Finance was a collaborated effort with IBM podcast, which is ओके, IBM पॉडकास्ट. ओके. yes. So they had, loved this idea of finance and a women-centric show which is revolving around finance with lots of stories and exciting content. So पहले शुरू हुआ हिंदी से कि we can reach more women, so we'll start with Hindi. Then we thought why not Gujarati, so it's my mother tongue, so Of course. it became easy. Then we thought फिर English क्यों नहीं, because students, modern women normally podcast में उस वक्त भी ऐसे था, आज भी ऐसे है कि English podcasts are a little more popular. So ऐसे करते करते we kept on adding languages to it. We had voiceover artists, and the biggest happiness that I was getting was that I used to create Hindi, Gujarati and English scripts, और वो English और हिंदी यूज करके मराठी और साउथ के जो चारों बाकी के languages लैंग्वेजेस. वो ट्रांसलेट होते थे और उसको रिकॉर्ड किया जाता था यूजिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट. Yes. द बेस्ट पार्ट वाज दैट we got connected very beautifully, the voiceover artists who gave voice to it. So they used to at times occasionally when we spoke, they used to come and tell me that हमको भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. I also didn't think like this about finance. So that was a first hand feedback which used to come before even the episode was recorded primarily in the studio. So that was a delightful experience I had. I can completely correlate that because me, of course, being a voice artist also, because जब हम कोई स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ना नहीं होता, you have to get the context of it, उसमें उस तरह के इमोशंस डालना, वॉइस मॉड्यूलेशन, और इन शॉर्ट स्क्रिप्ट में जान डालनी होती है आपको कि आप जो अपने लिसनर्स तक पहुंचना है. सो ऑफ कोर्स आई कैन कोरिलेट कि आप पढ़ते हो तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है. राइट. एंड वन मोर थिंग, you also got the chance, the opportunity, the leverage to be the TEDx speaker. वो आप उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? जी, so LaxmiGyaan, I really wanted it to be on multiple places, multiple cities, because जब एक आजकल हम एक influenced world में जीते हैं, so unless everybody is doing it, we would not want to do things. So Yes. in spite of saying that financial education is so critical, financial literacy तो होना ही चाहिए, still it's like ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी इतना urgency क्या है. So I wanted to be on multiple places, multiple cities, and TEDx was a beautiful platform to not, because TEDx is not about branding yourself, but TEDx is about discovering the core of what you're doing. So that's how I can define that journey. Inspiring stories, of course. Yeah, so it was not कि आके मैंने स्टेज पर कह दिया कि मेरी ये जर्नी थी और ऐसे हुआ फिर ऐसे किया मैंने. It was more of lots of discovery happened. I wrote 6 drafts of my TEDx talk. In fact, in spite of being into this speaking profession for so many years, and then I could churn out the actual TEDx talk. It was a 7.5 minutes talk, but it took 4.5 months of preparation for me. So proper coaches were assigned. I was made to understand how can I articulate it better, voice it better. How do I make sure my entire body is speaking to the audience and not just Of course. me putting my words. So tremendously insightful, and of course we learned from each other because we were 9 speakers. So I was at the TEDx Surat, which happened in December 23, and as I said, the scripting, the drafting, the voice modulation, the presentation, and it gave me a different level of a high in the mission that I'm on. Okay, so apart from, as I would further like to know, जैसे एक तो हो गया कि जैसे ई लर्निंग फॉर्मेट में, पॉडकास्ट फॉर्मेट में
audiobooks give. Okay, I'm coming to this point. Your author, you're the author of a book. उसका क्या audio version available है अगर Audible वगैरह में, या नहीं, as फिर of it is now, yet to be no. done? You've made me think. Yes, it's not available as of now. Okay, because of course काफी लोग आजकल सुनना पसंद करते हैं, तो मे बी शायद एक वो हो सकता है. Okay, That's an so insight I'm taking from the podcast. okay, That's the glad. benefit of talking to a voice artist. Okay, so anyways, in terms of जो जैसे हमने बात की बुक्स, पॉडकास्ट, ई-लर्निंग कोर्सेज, अगर कोई इस तरह का ऑफलाइन सीखना चाहता है, वन ऑन वन या जैसे कुछ ऐसा होता है, सो डू यू कंडक्ट सच वर्कशॉप्स या इस तरह की ट्रेनिंग्स फ्रीक्वेंटली आप करते हैं क्या? जी, so when it comes to groups or corporates or institutions, organizations, there are lots of offline campaigns that I do. And Okay. in fact, जो मैंने आपको concepts बताए, जो हाउसी, कुंडली वगैरह, most of the times, you know, the highest impact comes in offline because people meet each other, they talk, they take हाँ. perspectives, so that gives a completely different level of learning to them. So I definitely prefer offline sessions when it comes to these kind of, you know, exciting concepts. In fact, there are two interesting things that we offer. One is that जब शादियां होती है, तो शादियों में क्या होता है कि देर इज लॉट ऑफ संगीत, कोरियोग्राफी, बहुत कुछ हम करते हैं शादियों में. बट टू पीपल आर स्टार्टिंग देयर लाइफ, एंड दैट्स वेयर, यू नो, शुरुआत से ही हम कहते हैं ना, बच्चों को अगर अच्छे हैबिट्स डाल दो तो लाइफ टाइम रहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू बर्थ और अ न्यू लाइफ ट्रैक दैट दे आर टेकिंग. वहां पर अगर फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन शुरू हो गए तो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, वरना फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन आफ्टर 20 years of marriage. So that's where, you know, we have a concept called Saptapadi. So Saptapadi is 7 financial promises. तो जो आप 7 promises फेरों के वक्त लेते हैं, ये 7 financial promises है जो कि एक प्री वेडिंग तरह का फंक्शन है. And Okay. it also goes detailed with a pre-wedding you know, financial counseling between for the couples. तो ये एक तरीका है. और a lot of people come to me for personal counseling as well, where, you know, उनको ऐसा है कि हमने अब तक आउटसोर्स ही किया है फाइनेंसेस, वी वांट टू अंडरस्टैंड नाउ, या फिर आई हैव डन समथिंग बट अब बहुत सारा रायता फैला हुआ है, तो उसको समेट के आप मुझे बताओ क्या डायरेक्शन हो सकती है. सो वी डोंट रिकमेंड कि ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये करना है. दे आर मोर ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम कि आपको सेविंग्स बैंक से लेकर क्रिप्टो तक सब कुछ पता होना चाहिए. सो व्हेन यू नो द पर्पस, यू कैन अलाइन योर ओन लाइफस्टाइल्स टू इट एंड यू कैन जज कि आपके लिए बेस्ट क्या है. ऑफ कोर्स ऑप्शंस इतने सारे होते, तो सही डिसीजन मेकिंग, इफ आई कैन गेट द क्रक्स ऑफ दैट, कि सही डिसीजन मेकिंग होनी जरूरी है. किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो तो बात की बात है, बट उसका जो जजमेंट लेवल होता है उसको कैसे एनहांस करना है वो उसके लिए जरूरी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर ऑल्सो फीचर्ड इन लाइक, जैसा मैं जानता हूँ, इन टॉप यू नो फाइनेंस वुमेन ऑफ 2023. लॉट ऑफ थिंग्स वर लाइक डन फॉर दैट. यू नो, आपको काफी जगह पे इस तरह से नवाजा गया था. So, of course, that's a great thing, and congratulations for that. Thank you so much. Okay. So, anyways, any you know, last but not the least, any typical advice to, you know, irrespective of age, as of now, nowadays age is just a number. Financial education की importance, या फिर क्योंकि डिसीजन मेकिंग में अगेन हमने इस बारे में हमारी चर्चा हुई थी कि काफी ऑप्शंस होते हैं. आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो दोज हु आर स्टेपिंग इनटू इट, मे बी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या जो डिसीजन मेकिंग में यू नो उस तरफ जा रहे हैं? I have learned something very beautiful and insightful from my father. He's no more, but that teaching is the life mantra which has actually given birth to LaxmiGyaan. So he used to always say that earning money is easy. भले ही कितना आपाधापी हो, but earning money is easy. Spending money is even easier than that. But the entire art, science, commerce, everything lies in managing your money. Yes. So you may say that okay, मेरी income अच्छी है, I'm working at a very good place, or I'm running a very good business, या फिर मेरे पास inheritance है, या जो भी है. So there may be a lot of income sources. Obviously spending keeps on increasing thanks to UPIs and thanks to so many lifestyle choices Yes. that I have today. But अगर हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो शायद हम कभी भी एक प्रॉस्पेरिटी लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे. देयर इज अ Right. लेवल ऑफ मनी, अ लेवल ऑफ वेल्थ
which comes from obviously investing and growing the money, but there is a level of prosperity where you are completely happy that you have your health is secured, your family is good enough with you, there's a sense of togetherness, and there are all baskets of your life are ticked properly. So financial education takes you to that level of prosperity. It's not just कि okay ये quick tip है, यहाँ पर invest कर दीजिए पैसा 4 गुना हो जाएगा. That's not what financial education is. It is more of gifting prosperity to the families, and this has Yes. to be gifted at every age, stage and phase. It cannot be like अभी हमारी उम्र निकल गई तो हमको नहीं सीखना है, या अभी तो बच्चे हैं तो उनको क्या सिखा के मतलब है. So it has to be across all age groups at every phase of life, because life keeps on changing every single day. Yes. एंड आज के समय में जैसे एक और चीज है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना ये जरूरी भी है, क्योंकि हम एक ऐसे वी आर स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड जहाँ पे आपकी आज कोई स्किल है, आई एम स्पेसिफिकली स्पीकिंग एज अ ह्यूमन, कि आपकी कोई स्किल ऑब्सलीट हो सकती है कोई भी समय में, बिकॉज इन द टाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है कि जो आप काम करते हो उसकी जरूरत ही ना हो कंपनी को. And that's why, of course, these lots of firing and this are started. We have, not just because of देखो recession, COVID एक अलग चीज है, but ये भी एक factor है. So multiple source of income होना. And one more thing I could recollect, मैंने बहुत time पहले कहीं पे, I don't know, it was some book on finance and economics, कि जैसे होता है ना, जैसे you go to the river with a bucket, तो like that's like a stream of income, but जब आप वापस आते हो तो उसमें ना what you call the holes of expenses, if I'm not wrong, मैंने कहाँ पढ़ा है मुझे याद नहीं है, maybe you can correlate. So that's where वो होल्स होने दीजिए, because पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे तो कमाने की इच्छा ही नहीं होगी. Yes, yes. Let them be. But then is there any concrete sand inside which is capturing all the Yes, savings, yes. तो कुछ तो है क्या बीच में जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, सो दैट द होल्स रिमेन द सेम व्हेन यू आर एजिंग. ऐसे नहीं हो कि अभी तो हम रिटायर हो गए तो हमको थोड़ा अभी तो सोचना पड़ता है. सो दैट इज नॉट prosperity. Then you have just earned money and stopped there. But you retire early, you retire rich, whatever it is. But is the money staying with you? And are you really taking all the joys of life? Are you really inspiring people with the joys of life? Is the real prosperity that you have to live for? Right. Absolutely true. So, well, finally, Priyanka, it was great to have you on this show. Learning insight for me. बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, about your journey and about the amazing work you are doing. और जिस तरह से आपने उसको एक होता है ना, जैसे in terms of education, in terms of presenting it, जो आपने एक होता है ना बिल्कुल एक रिचुअल फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी चीज है. एंड again, thank you so much for coming on this show, and it was indeed insightful, and I wish you all the best for all your future endeavors, everything. My pleasure, Harsh. All the best to you. God bless you for bringing Thank all you these thoughts to the world. It's really commendable. Thank you so Thank much. you so much.